Actually, sorry if this video is becoming very lengthy, but this is all the informations that we could share. Actually, and the process is really complicated. So be sure that you watch this video. I mean, don't skip, because if you skip, that means you miss some information. And these all, I mean, we are sharing this information so that your life becomes more easy. হ্যালো, ওয়েলকাম টু নন্দেমন তালুকদাস। আমরা পার্ট 1-এ বানিয়েছিলাম হচ্ছে জাপান থেকে কলকাতা যাওয়ার পুরো ডিটেলটা। এবারের ভিডিওটা যে পার্ট 2, কলকাতা থেকে জাপানে আসার পুরো ভিডিওটা। যেহেতু এটা আমরা সবাইকে মাসে আমাদের ইনফরমেশনটা ছড়াতে চাইছি, সেজন্য এটা আমরা ইংলিশ এবং কিছু কিছু হিন্দি দিয়ে বানানোর চেষ্টা করছি, কেননা বাংলাটা হয়তো অনেকেই বুঝতে পারবে না। তো তাও যদি কারোর বাংলা, হিন্দি, ইংলিশ তিনটেতে এবং জাপানিজেও যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তোমরা আমাকে করতে পারো। তো আমি আমার বলা বন্ধ করে ভাস্করে বলা স্টার্ট করাচ্ছি, যাতে ও পুরোটা ডিটেলে বলতে পারে। আচ্ছা, first of all, you should get the link to the previous video below in the description box, so that you can refer to the previous video. And the previous video was about coming from Japan to the India, and now basically it's a returning to the Japan from India, and for that what are the related documents and etc. So we will start with first thing is mySOS app. हम लोग ना यहाँ पर जो अभी पिक्चर देख रहे हो, ये वाला ऐप का साइन पे ही आप डाउनलोड करो। प्लीज डू दिस लिंक for the mySOS. So basically it is very important. We recommend is go to the MOFA mySOS app, search in the Google, and you will go to a page, and there is a link or a QR code to install this app. Click on the link and then install the app from there. After you get the app, basically then you follow the instructions. So first thing is you have to register your name, passport number, and your name and date of birth. That you have to put the first thing, and then you click register, and then after that you will given a page where there are two blocks. Where is first one is in the left is the pre-registration for the quarantine check, like this kind of thing, and you click on there, and there are 4 things that needs to be uploaded. Actually not uploaded, that 4 things that you have to complete. First and second 2 things are kind of a web questionnaire and a pledge. This web questionnaire and pledge is about where you actually stayed in India, and whether you have any symptoms, and etc, these kind of things, and also your name, passport number, and your details in address details in Japan and in. After that there is a triple vaccination certificate that you have to upload through in the third link. So I said there are 4 things. Third thing is the upload your vaccination certificate, and the 4th thing is the negative RTPCR report that you have to complete in India. So for this negative RTPCR report, the same thing, before boarding 72 hours, within that amount of time you have to draw the sample and get the report. After you get the negative RTPCR report, there is a MOFA form for entry to Japan, RTPCR report format, and that you should download from the MOFA website and get it filled up by the clinic or a doctor in India, who will verify these facts about the clinic and your sample times, your passport number, and basically the sample collection time. This will be written, and the doctor should verify this, and he will put his signature and stamp. And this is a very important document. And when I say you have to upload the negative RTPCR report, that means you have to upload this MOFA form, MOFA negative RTPCR report form, not the form that you get from the clinic. If you don't use mySOS app, basically what will happen, you take all these printouts and come to Japan, and at that point of time it will be delayed. The whole quarantine process and everything that follows in after coming to Japan, that will be very much delayed, and it may take 7 hours or 8 hours. Yeah, I mean it's a huge amount of time. So but if you have this mySOS app installed,
then what can happen is you may complete everything within 3 hours. So and actually I have seen that some people have completed everything within 90 minutes, so that is also possible. So the point is, this mySOS app, this is known as fast track entry to Japan. So when you have completed this 4 document submission and review process, then your mySOS background page will be green. Initially it will be in red, but when you completed it, it will be green. And when you come to Japan, after your flight arrival, at the arrival gate they will check whether the front screen is green or yellow or red. If it is green, that means you are all okay to go directly to the next process. And if it is yellow, that means some part is not verified, or maybe there is an accompanying child for which this vaccination certificate or RTPCR is not necessary, or this kind of thing. For in that case, for the minor cases, it will remain yellow, and then at the entry gate, at the arrival point, they will further check and they will verify. So what will happen after coming to Japan, that's again another story, but I will come to that. So before flying, what you need, you basically have to complete mySOS app. But there is one catch. When you are coming to the airport, and came to the airport, and someone in the airport desk, he will check your document. At that point of time, the negative RTPCR report from the clinic is required, because the airport officer, the desk officer, he will check basically whether you have obtained MOFA form as well as the negative RTPCR report from the clinic. So you need both of them. But after coming to Japan, you only need the MOFA form. You don't need the actual negative RTPCR report. So that's only before boarding the flight. The airport, your airline's desk officer, he will check it. So be sure to carry all the printouts. Okay, now the next thing is the quarantine process in Japan. So there are a few things very important. If you are vaccinated in Japan, as well as you have a negative RT-PCR report beforehand, before flying, then you do not need any quarantine. If after arrival you will also be tested again, and at that point you are again negative, so basically you are negative before flying, after flying, and also you are triple vaxxed in Japan, you are all set to go. No quarantine, you just go to home using public transport. But if that is not true, then you fall to other points. By the way, India is now a non-designated country given by Japan. If you are in a designated country, then the quarantine procedure becomes much more strict. Basically, this video is about for the Indians coming from India to the Japan, and who are actually Japan resident. Now they are returning to Japan and they are vaccinated in Japan. So for them, this is the rule basically. So by the way, if you are not vaccinated in Japan, then what will happen? You are subjected to quarantine, and that quarantine is home quarantine. If you are vaccinated in India before flying, you have negative certificate, so then you will be placed to home quarantine for I think for 7 days. But that 7 days can be shortened if after 3 days you submit a negative vaccination, negative RT-PCR report again. हम लोग जब इंडिया से जापान पर आए तो उसके लिए हम लोगों ने जो किया, जो हमारा इंडिया में तो हम लोग पीसीआर टेस्ट किया, उसका नेगेटिव रिपोर्ट आया। वो जो नेगेटिव रिपोर्ट वो हम लोग मोफा का जो मतलब प्रोसेस जो पेज है वहाँ पर अपलोड मतलब लिखा पेन से, एंड डॉक्टर से साइन भी कराया। डॉक्टर एक्चुअली उसका डॉक्टर का ये मतलब जो उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये मोफा फॉर्म
फिलअप करके उसका साइन करेंगे, मगर उससे पहले क्या होगा कि वो जो क्लिनिक से जो रिपोर्ट आएगा उसे वेरीफाई करके वो करना चाहिए। वही क्लिनिक में एक्चुअली जापान में क्या होता है ना कि क्लिनिक पे अगर आप सैंपल दिए, उसके बाद क्लिनिक का ही पूरा जिम्मेदारी है कि डॉक्टर का साइन लेके नेगेटिव रिपोर्ट बना के मोफा का स्टाइल में बना के देने का। लेकिन इंडिया में ये 2 भाग में होता है। अगर एक क्लिनिक से आप टेस्ट कराओगे और डॉक्टर के पास जाके वो वाला साइन कराओगे, वो वाला पूरा चीज आपको mySOS जो हमने दिखाया वो वाला ऐप में अपलोड कर देना है। ये इंडिया से निकलने से पहले ही करना है, क्योंकि सब काम होकर रहेगा। इसीलिए फिर अपलोड करने के बाद ना वो चेक होगा, इंटरनल चेक होने के बाद आपका जो स्क्रीन है वो रेड से येलो एंड ग्रीन होगा। ग्रीन मतलब हो गया, मतलब आपका चेक हो गया एंड परफेक्ट है। येलो कभी कभी आ सकता है, वो डिले भी हो सकता है, कुछ भी प्रॉब्लम के लिए हो सकता है। एंड बच्चे लोग अगर होगा उसका तो उतना इंफॉर्मेशन नहीं है ना कि उसका नेगेटिव रिपोर्ट एंड ऑल, तो उसके लिए येलो ही रहेगा। वो एकदम ओके है, वो लेके ही आप ट्रैवल कर सकते हो। हम लोगों का जैसे बड़ा लोगों का सबका ग्रीन हो गया था और वो वाला लेके हम लोग यहाँ पर आए। और एयरपोर्ट जाने के बाद हम लोग का एक डेस्क था, टिकट लेने से पहले सिंगापुर एयरलाइंस था इसीलिए वहाँ का था। तो वहां पर जाके हम लोगों का वो नेगेटिव वाला रिपोर्ट एंड क्लिनिक वाला नेगेटिव वाला रिपोर्ट एंड डॉक्टर का साइन वाला जो नेगेटिव और एक बनाया ना, बोला ना कि मोफा का प्रोसीजर में बनाया, ये दोनों पेपर वहां पर चेक होगा। वो चेक भी मतलब होगा, यही समझ के आप जाओ, चेक होगा वहां पर। उसके बाद आप लोगों को थोड़ा पूछेगा कि आप ठीक हो, मतलब बीमारी तो नहीं है ना, तो वो जनरल क्वेश्चंस होगा। और उसके बाद वो एक पेपर रेडी करके आपको देगा एंड आपका पासपोर्ट नंबर लिख के, वो पेपर एंड पासपोर्ट एंड ऑल लगेज लेके फिर आपको लाइन पे खड़ा होके टिकट लेना पड़ेगा। हम लोगों के टाइम बहुत ही खाली था, तो इसीलिए हम लोग मतलब एक ही लाइन चेन प्रोसेस के तरफ हो गया। लेकिन वो करने के बाद आपका टिकट का बोर्डिंग पास मिलेगा, क्योंकि वहां पर एक पेपर भी दिया था हम लोगों का। तो एंड उसके बाद सब तो नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन वो वाला जो नेगेटिव सर्टिफिकेट क्लिनिक का एंड डॉक्टर से साइन कराया हुआ पेपर फ्रॉम द डॉक्टर, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड द मेन थिंग, mySOS ऐप इंडिया से डाउनलोड करो एंड अपलोड भी इंडिया से ही करो। अगर नहीं किया ना, ये अगर का जो फासला है ना, ये बहुत टफ होता है। क्योंकि हमने देखा क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि 7-8 घंटा वो एयरपोर्ट पे चेक करने के लिए हम लोगों को जैसे ग्रीन हो गया था ना, तो हम लोग एयरपोर्ट उतर के एयरपोर्ट का स्टाफ को दिखाया कि देखो हमारा ग्रीन है, तो उसने बोला चलो चले जाओ। लेकिन जिन लोगों के पास ऐप भी नहीं है, ग्रीन का तो क्वेश्चन नहीं है, वो लोगों को बिठा के एक एक करके छोड़ा। मतलब बहुत और भी लंबा लाइन लगेगा। ये एक बहुत ही मुश्किल सा काम है। एंड ये एंड वन मोर थिंग, अगर आपका वैक्सीन इंडिया का वैक्सीन है, इंडिया का वैक्सीन मतलब इंडिया में जो यूज कर रहा है वैक्सीन, जैसे कि कोविशील्ड, कोवैक्सीन, ये वाला शायद जापान में उतना भी ये नहीं हो रहा है। इसीलिए इंडिया का वैक्सीन लेकर आने का वाला जो आदमी मतलब जो होगा कि वो लोगों का यहाँ पर आके क्वारंटीन होगा। लेकिन अगर आपका जापान का वैक्सीन लिया, जैसे फाइजर या मॉडर्ना कुछ भी, एंड जापान से इंडिया गए थे आप और अभी आ रहे हो या बाद में भी आओगे, तब आपका क्वारंटीन नहीं होगा। सिर्फ आपका 2 चीज चाहिए, इंडिया से एक नेगेटिव रिपोर्ट एंड जापान उतरने के बाद और एक नेगेटिव रिपोर्ट। बस आप एकदम मस्त होके फ्री बर्ड होके उड़ के जा सकते हो। लेकिन अगर आपको इंडिया का वैक्सीन या कहीं और जगह का वैक्सीन होगा तो वो उड़ना थोड़ा मुश्किल होगा। तो एक्चुअली ये तो है। और एक्चुअली अनदर थिंग आई फॉरगॉट टू से, वो मोफा का mySOS का जो पेज है ना, वो फिल अप करने व्हेन यू स्टार्ट फिलिंग अप, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू विल सी दैट दे like 30 hours or 36 hours remaining to complete your process. So don't start this whole review process like 4 days 5 days before. मतलब ऐसा मत करना कि आज अपलोड करने का नाम अपलोड कर दिया, कल उम्र करेंगे, फिर ऐसा नहीं। बैठो, टाइम दो एंड अपलोड करके फुल स्टॉप करो, फिर जाओ। हाँ, एक्चुअली मैं तो ये रिकमेंड करता हूँ कि सब कुछ अगर मिल गया, नेगेटिव RTPCR रिपोर्ट में मिल गया, तो आपका जो अभी 72 आवर्स बिफोर ये मिल गया ना, so at that point of time you start feeling. So actually I have seen one case, the one guy he actually started feeling this whole thing, I mean this mySOS thing like much before.
after coming from Japan to India, he started feeling, and he said that okay, I'll finish it up when I'll get the negative certificate. Other things I already have, but he was stuck. And what the problem was, he couldn't uninstall and reinstall the app because even if he uninstall, the things actually remain in their system. বাংলায় একটা কথা বলে না, ঢিলটা ছোড়ার আগে ভাবো, ছুঁড়ে ভেবো না, সেরকমই। যদি আপলোড করতে হয়, বসো, হোয়াটসঅ্যাপ বন্ধ করো, আপলোডটা করো, তারপর হোয়াটসঅ্যাপে ঢোকো। एक्चुअली वही हुआ ना, वो फंस गया वो बंदा, क्या हुआ, एक बार अगर कर दिया कमिटमेंट या स्टार्ट, वो खत्म करके ही छोड़ो। वो नेगेटिव आर्टिफिशियल है, उसके बाद पास मतलब फिर भी मतलब फंस गया। नहीं, ये बहुत टफ है। तो फिर वो था मतलब बी सीरियस। हाँ, स्टार्ट करने से वो 4 चीज जो है ना, वो 36 आवर्स में कंप्लीट करना पड़ेगा। तो फिर स्टार्ट करो, मतलब नेगेटिव आर्टिफिशियल रिपोर्ट मिल गया, अभी यू स्टार्ट, नाउ यू स्टार्ट फॉर लाइक क्वेश्चनेयर एंड प्लेज एंड एवरीथिंग। And another thing she mentioned, actually this questionnaire thing you will also get when reach the airport. The airport officer, he will give you one page, and in that page what is given is this link to the questionnaire. Basically, he is also insisting you to download, install and complete this mySOS thing. So before boarding the flight, so that when you are flying to Japan, at that point of time, all these review process, everything is completed. एक सिंपल बात है, एयरपोर्ट जाने से पहले घर वालों के साथ 1 घंटा कम बिताओ, लेकिन ये वाला काम पहले करो फिर बिताओ, क्योंकि ना मन तो बहुत दुख होता है कि आप सब छोड़ के आ रहे हो, और फिर जाके ना ये इतना स्ट्रिक्ट प्रोसेस है, तब आपको अगर स्टक कर दिया ना, वो वाला टेंशन ना हार्ट फेल के बराबर है। क्योंकि कल हम लोग जब वेट कर रहे थे, जब नेगेटिव रिपोर्ट आने वाला था या हमारा डॉक्यूमेंट ओके है कि नहीं, ये सब बहुत टेंशन हुआ, मतलब प्योर टेंशन। Actually, now you should start about what happened after coming to Japan. Okay, so after you reach Japan, you arrived, and now you will be asked whether you have already downloaded and installed mySOS app, whether it is they green didn't or ask. not. We showed them. And if you don't have that, basically then you are transferred to a more slower line, which is non-fast track, because we already have. That's not a line. That's a waiting place. That's basically then one by one will be called, and they will check all the documents and everything, and it will be much more complicated process and much more time consuming. I mean, it may be like 7 hours, 8 hours like that. So we had mySOS app, and it was green. Then first thing, at the first counter, they gave a check sheet. Actually, I am showing it here. I'm omitting the details about my personal details, but the thing is, you will get this check sheet, and they will fill the different parts of this check sheet in different points. And there are many points. Actually, we don't remember now everything, how many points are there. But the thing is, this check stopping sheet, point, right? How many stopping points are there? The thing is, in the check sheet, they will check whether you have any health condition or not, what is your flight time, and where actually you stayed in India, and then this different point of thing. And the last boarding pass is very important. Last boarding pass is very important. Very, and your seat number. Boarding pass and seat number, they will confirm all these things also in that check sheet. Which seat number allotted for you, not the which seat you seated. Yeah, so because we actually traveled as a group of 5, so we're 2 families who are traveling together, so we had this issue that we shifted a seat. And we must say that we know about this whole process, especially from our friend Ruma. I will show her face, and she will be very happy to see her face in my vlog. Yeah. Actually, she helped a lot. Yes. She is very much many particular lady, and every point of time, every time she called us and do this, do that, do this. Why don't you do this like this? She is too good. Yes. So basically, now what happens? You are actually in the pipeline. And एक बात बोलूं, ये पाइपलाइन ऐसा होता है कि जैसे मैकडोनल्ड्स में होता है ना, चिकन घुसा डाल दिया, नागेट होके बाहर निकल गया, ऐसे ही होगा। आप उतर जाओगे और बोल दोगे कि हमने उतर गया, बस अब उस लोगों का कोई पाइपलाइन में पड़ जाओगे ना, तो फिर क्या होगा, वो पाइप में वो
डिफरेंट पॉइंट्स में आपका डिफरेंट थिंग चेक होते जाएगा व्हाटएवर. सो वो चेक शीट में जो है ना वो उसमें जो भी लिखा होगा वो कंफर्म करते करते एक जगह होगा जहाँ पे वो स्टैम्प मारेगा, मतलब एक कांजी का एक स्टैम्प मारेगा. एंड ऑल्सो at some point of time you will also give your saliva for testing purpose. So this is if you are flying from India to Japan for the first time, basically not returning but the first time entrant, at that point of time also you will surprised that it's not nasopharyngeal swab. In Japan what happens, it's a saliva, so you have to just spit in a funnel. And you are not allowed to have some drink or food before 30 minutes of the test. For 30, it's very essential. Yes. Very Otherwise, essential. You have to wait. Otherwise, you have to wait again. They will check whether you have already have taken some drink or not before that test. If you have taken some drink, then you have to wait. Wait, yes. So don't take any drink, and then you will go to a waiting area and wait there. So how they will recognize whether whose sample is whose? So basically for that they will put a number in your passport at the back cover your passport. The sticker. A sticker, and the sticker last 4 digits they will call. So calling means you are negative. So you will go. Calling means you are negative. You will go to a basically a waiting place, so that you will basically wait for the result to come up, and that is actually kind of a test area because everyone is becoming test. I mean, what will happen if you are positive and if you are, whether your number is called or not? No, ये इस बात में मैं एक बात बोलना चाहती हूँ. अगर आप पॉजिटिव हुआ तो आपका करने का कुछ नहीं है, सब लोग जापान करेगा सब कुछ. और अगर आप नेगेटिव निकले तब तो आप सब कुछ करोगे, आपकी जिम्मेदारी, आप घर चले आओ. मतलब बहुत ही सिंपल सा रूल है. अगर आप पॉजिटिव हो जापान का जिम्मेदारी है, अगर आप नेगेटिव हो तो आपका जिम्मेदारी से आपको घर आना है. हाँ, तो ये है. मगर there is one more thing is sometimes the numbers are skipped. So for example, let's say one number is 0100. Okay, and then when calling, this 0100 is never called. So someone called like from 99, skipping 0100, go to 0101. So basically what that means, that doesn't mean actually you are negative, positive. Nah. That may mean that your sample is now being retested. They want to reconfirm whatever they have got, and this may delay yours, but you don't become very much test. I mean, it just means that maybe कोरोना हो ना हो, हार्ट फेल हो सकता है. हाँ, तो फिर don't become test at that point of time. Just just be hopeful that it is just being retested. And after all this happens, you will get a pink slip. And in the pink slip, you will go to a desk, and the pink slip at the top of it, they will check your That's not passport a pink, number. that's an orange. Yeah, orange slip, and at the top of it, they will put a sticker, a stamp like COVID-19 negative. And the date. And based on this seal, now all this happening before you have done your immigration. Now with this orange slip, your passport and boarding pass, everything, now you go to the immigration. You are eligible to immigrate. Otherwise, आपका immigration नहीं होगा जब तक आप negative नहीं आओगे. Right. And then you complete your immigration and customs and everything. Basically. And one more thing बोलना चाहती हूँ, कोई भी ग्रीन वेजिटेबल, कोई भी डेयरी प्रोडक्ट मत लाओ, क्योंकि ना ये जो बैग होता है ये ऐसे ही पड़ा रहता है, और वो वहाँ पर जो डॉग रहता है उसको आराम से टाइम मिल जाता है कि वो आराम से स्मेल ले और जिसके बैग में हो मार्क करके रखे और सब फेंक दे. प्लीज मत लाओ. हाँ, तो एक्चुअली व्हाट हैपेंस इज there are plenty of sniffer dogs in these places, and they will smell. If you bring any dairy products, any meat product, any green vegetables with the skin on or off, whatever, don't bring green vegetables, don't bring any dairy product and meat. Dairy product, any meat, don't bring this. तो
Other than this, if you have the sealed packet, No, but sealed meat is also not allowed. Sealed meat is also not allowed, not sealed meat. Other things like if you bring cookies, biscuits, everything, these kind of things are okay. There is no such problem. হ্যাঁ, And তো আমাদের বক্তব্য আর কিছু সেরকম নেই, আর কিছু আমাদের অনেক কিছুই হলো বললাম, এবং আমরা চেষ্টা করছি পার্ট 3 তে পুরোটা বাংলায় ছোট্ট করে বলে, বাংলায় যদি আমি ছোট করে কথা বলতে পারি না, অনেক কথা বলি, কিন্তু তাও ছোট করে যদি আরেকটা ডেসক্রিপশন করে বাংলায় করা যায় তাহলে পার্ট 3 করব। পার্ট 1 2 বাকি সব ইনফরমেশন গুলো তোমরা নাও এবং ডু শেয়ার আওয়ার ভিডিও, বিকজ দিস ভিডিও ইজ ভেরি ভেরি হেল্পফুল টু ইউ if you want to come to Japan or if you want to go to Kolkata from Japan also, and please don't hesitate, jodi kichu janar thake do message us and we will reply, and Bhaskar will definitely describe the all procedure, and stay tuned with us, আমাদের চ্যানেলের সাপোর্টে থাকো, যদিও ভিডিও বানাই না তাও ভিডিও কখনো কখনো বানাই। থ্যাংক ইউ সো মাচ রুমা, এবং তোর সাথে জার্নি করে ভীষণ ভালো লেগেছে। আমি জানি না, আমি খুব একটা কমফোর্টেবল হই না অনেকের সাথে জার্নি করতে, বাট উই রিয়েলি এনজয়েড ইয়োর কোম্পানি, স্পেশালি মেহুল। সবাই ভালো থেকো, আমাদের চ্যানেলে থেকো, অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করো, অ্যান্ড কবির হয়েও না, নেগেটিভ থাকো, বি নেগেটিভ, এটা এখন আমাদের নতুন কথা চলছে, বি নেগেটিভ। ফিরে আসার সময় বি নেগেটিভ। চলো বাই। ওকে।